Aditya, Yes, ma'am. how are you? Ma'am, a little bit fine. अच्छा, तो वीकनेस इज देयर? No, ma'am. नहीं ना, ऐसा वीक तो नहीं लग रहा है ना? No, ma'am. ओके ओके, ठीक है. So if you can ना try eating that मुनक्का. मुनक्का जानते हो ना? Yes, ma'am. हाँ, तो मुनक्का रोज सुबह सुबह ना आप खाना चालू कर दो, तो इट विल बी वेरी नाइस. ओके. Okay, ma'am. भूख लगाती है कि खाने में दिक्कत है? No, ma'am, अब तो कुछ दिक्कत नहीं, अब तो ठीक हूँ, बस स्कार्स है मैम. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके. Thank you. चलिए, slowly you will recover. So I find 8 students have joined. Now I was asking that जितना अपन ने कर लिया है उतना आप लोगों ने बुक में रीडिंग कर ली कि नहीं? Tell me, because that what you have to do. Okay, टेक्स्ट बुक में आपका पहला पार्ट जो दिया हुआ है डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर सेंट्रल डॉग्मा, डिड यू रीड इट और नॉट? Yes or no? You can write in the chat box. Yes, ma'am. ओके, प्रांजल ने पढ़ा, मंजुल ने भी रीडिंग कर ली. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? यू हैव रेड इट और नॉट? अपन को जल्दी से मॉलिक्यूलर मैम आज कर लेंगे. आज कर लीजिए, ठीक है. तो अब नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन चिल्ड्रन एंड वी विल ट्राई टू फिनिश अप. अच्छा, आई सेड ना दैट आई विल बी सेंडिंग यू सम नोट्स, so that I will do it today. Okay, remind me in the WhatsApp only. तो हम ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों भेज देंगे आप लोग को. पर आप लोग का काम रहेगा कि you draw those diagrams, leave one page, then draw the diagrams, then leave one page. और if I am sending the notes, तो फिर आप डायग्राम के साथ उसके नोट्स भी नोटबुक पे लिखना है. Okay, and same way for the transcription and the translation. ट्रांसलेशन ऐसा करना आपको, डायग्राम बस बनाना और फिर उसके बाद एक पेज छोड़ देना, 2 पेज छोड़ देना, क्योंकि ट्रांसलेशन के डिफरेंट स्टेप्स है. सो दैट आई विल डिक्टेट इन सिंपल वर्ड्स एंड इन ब्रीफ. ओके, लेकिन ट्रांस दैट इज योर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज गिवन इन ब्रीफ ओनली, तो वो आप डायरेक्ट अपने नोटबुक में लिख लीजिए. सो टुडे ओनली यू टेक अप दोस थिंग्स. ओके, इन द इवनिंग बाय 8 o'clock आई विल बी सेंडिंग एंड यू ऑल डू इट. फिर कल तो अपना क्लास नहीं रहेगा, तो वेडनेसडे को मॉर्निंग में आप वो सारे पीडीएफ सबको भेज दीजिए. यू डू दैट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो अगर वो जितना भेज रहे हैं वो सब कंप्लीट हो गया तो फिर अपना पूरा सेंट्रल डॉगमा कंप्लीट हो जाएगा. सेंट्रल डॉगमा इज दैट ओनली. फर्स्ट रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस. सेकंड, डीएनए बनने के बाद ऑन द डीएनए व्हाट विल बी फॉर्म्ड देन? अंजलि, कैन यू टेल मी ऑन द डीएनए? mRNA will be formed. Very good. फिर what is that process called? ट्रांसक्रिप्शन. तो वो पूरा अपना ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा. फिर mRNA will go out of the nucleus and it will bind with what, Shifa? It will bind with what? Ma'am, proteins. नहीं, it will bind with what to form proteins? Ma'am, tRNA. नहीं, mRNA किससे बाइंड होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करता कौन है? राइबोसोम. हाँ, राइबोसोम. तो mRNA जाके राइबोसोम में बाइंड हो जाएगा. फिर बाद में tRNA आता जाता है और वो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है. फिर ये अपना एक टॉपिक खत्म हो जाएगा. सो दैट वी हैव टू मैम फिनिश ये इट. फिर से एक्सप्लेन करना मैम स्टार्टिंग से. Okay. I am telling that what is the central dogma of protein synthesis. Last period we have started that only. अपने DNA, mRNA, tRNA structure खत्म करने के बाद में central dogma of protein synthesis start किया है. And what is the meaning of central dogma? So I'm just repeating. Try to revise everyone और याद कर लो. That is the scheme which tells that how the protein synthesis will take place. Remember, whatever physiology we are seeing या whatever morphology we are having, जो हमारे features है, जो हमारे that is physical features plus your physiology, वो सब depend करता है enzymes पर और hormones पर.
Enzymes and hormones both are proteins. Okay, and according to the protein synthesized, which may be hormone, which may be enzyme, the whole physiology will depend on, and your height, health, everything will depend on that. Is it clear? अब वो कब कौन सा प्रोटीन बनना है, ये इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में कोडेड रहती है, और वो डीएनए हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है. अब डीएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं हो सकता. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है आदित्य? न्यूक्लियस, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है. साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में उसका ऑर्गेनेल क्या है जहाँ होता है? राइबोसोम. हाँ, राइबोसोम. तो अब इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के पास है, लेकिन सिंथेसिस तो बाहर होना है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में. तो वो इंफॉर्मेशन ना वहां से राइबोसोम तक पहुंचती है. अब कौन पहुंचाता है? वो एमआरएनए. इससे उसका नाम ही है मैसेंजर आरएनए. ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए में जो इंफॉर्मेशन कोडेड है, इट विल बी टेकन बाय द एमआरएनए टू द राइबोसोम. Okay, now so how the process will go on? Number one, DNA. On the DNA, more DNA will be synthesized. That process is known as Manjul. Application. Replication. ठीक है, why Manjul this process is called replication? Ma'am, because DNA synthesize the new DNA. No. Who can give me the reason why you call this process of synthesis of DNA replication? Ma'am, it involves the formation of a replica of DNA. And what is the meaning of replica, Astha? Ma'am, same copy. Exact copy. What you have to say? Exact copy. Exact copy. ठीक है, तो जो डीएनए के ऊपर नया डीएनए बनता है, वो उसका एग्जैक्ट कॉपी होता है. ठीक है, क्योंकि नया डीएनए अगर हमारे सेल्स में कोई डीएनए बन रहा है, हर सेल में डीएनए का सिंथेसिस चलता रहता है, क्योंकि हर सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, माइटोसिस तो चल ही रहा है. ठीक है, मियोसिस होगा तो वो ओवरीज में और टेस्टिस में होगा. ठीक है, और वेदर इट इज अ माइटोसिस और मियोसिस, तो आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल को डबल करना है. डबल करने के लिए उसका सिंथेसिस होना चाहिए. वो सिंथेसिस होगा तो मतलब सेम टाइप का डीएनए बनना चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी बनना चाहिए, तब तो डॉटर सेल्स को सेम डीएनए जाएगा. ठीक है, अब वो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. रेप्लिकेशन होने के बाद में डीएनए के 2 स्ट्रैंड सेपरेट होंगे. एक एक स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं शिफा? जिसके ऊपर mRNA बनने वाला है, what is it called? Each strand of DNA is known as what after separation? Shifa. All these terms we have used last time. जल्दी बोलो, ये अपना रिवीजन ही चल रहा है. शिफा, लेफ्ट द क्लास और व्हाट? अनम्यूट तो होना चाहिए माइक कम से कम. नहीं बन रहा है तो अनम्यूट करो तो. हाँ, what is that? Each strand of the DNA called on which the mRNA will be formed. Poonam. Ma'am, template. Very good. It is known as template. शिफा भूलना नहीं है, ये सब के याद हो जाना चाहिए. कभी भी हम सोते से भी पूछे, ओके, कोई आपसे सोते से जगा के भी पूछे तो बोलना नहीं. Is it clear? You don't forget. हाँ, Ma'am, when the strands of DNA separate, हाँ, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ना दे विल बी सेपरेटिंग एट both the times. When the new DNA has to be synthesized, that time also you find the 2 strands will separate. Okay, and when on the DNA mRNA has to be formed, so then also the 2 strands will separate. Is it clear? तो वो आगे हम प्रोसेस आपका भी स्लाइड्स दिखाते हैं तो you will understand. फॉलो, क्योंकि ना वो 2 स्ट्रैंड तो जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्डिंग रहता है. ओके, AT joined by Aditya, tell me how many A and T are joined by? A and T. हाँ,
Yuvesh. Quick, Yuvesh. A and T are joined by. युवेश भी लगता है लॉग इन करके चले गए। माइक अनम्यूट मैम। नहीं हुआ तो तुरंत अनम्यूट कर लिया करो, नहीं तो हम यही सोचेंगे कि आप भाग गए क्लास से। हाँ। Adenine and thymine are joined by what? मैम नाइट्रोजनस बेसिस। तो वही तो नाइट्रोजनस बेस है। मैम बाय द हाँ थिंक ना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो जल्दी बोलो। नंदिनी। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ तो ये भी बताओ कितने? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ युवेश क्या हो गया? हाउ द ए एंड टी आर जॉइंड युवेश? मैम बाय डबल हाइड्रोजन। And how GC are joined? And what? How G and C are joined? And by three hydrogen bond. हाँ by triple hydrogen bonds। ये सब हमेशा याद रखो, ये भूलना तो है ही नहीं, बायो स्टूडेंट है तो ये भूलना ही नहीं है कभी। ओके नाउ व्हाट हैपेंस, आप जो दो स्ट्रैंड्स है उसके ऊपर एमआरएनए बनेगा। तो आदित्य नाव ध्यान से सुनते जाना कि एक डीएनए के ऊपर मतलब एक डीएनए में आप देखते हैं कि एक फिक्स सीक्वेंस है, ए है फिर टी है फिर जी है सी है व्हाटएवर इट मे बी, जी जी और सी सी। ओके नाउ व्हाट विल हैपन, जब वो स्ट्रैंड अलग हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, नाउ आई टेक अप द स्लाइड्स आल्सो, ठीक है, तो साथ साथ आप देखते भी जाए और समझते भी जाए। सो एवरीवन विल क्विकली डू द रिविजन। So we are discussing the DNA replication. So today we'll take up the same thing once again, DNA replication. Okay, then I will start with the transcription. अच्छा, I should show you the video, that will be better. चलो पहले स्लाइड्स देख लो फिर हम लोग वीडियो देखते हैं। तो आदित्य ध्यान से समझ लो कि सेंट्रल डॉगमा का पहला स्टेप है रेप्लिकेशन, द सेकंड स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो गया मींस द एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड ऑन द एमआरएनए यू फाइंड मींस इन दैट एमआरएनए मॉलिक्यूल सारा इंफॉर्मेशन डीएनए से आ गया। नाउ एमआरएनए विल कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस through the nuclear pores present in the nuclear membrane and will come into the cytoplasm. As it will come into the cytoplasm, it will bind with the ribosomes and it will start the protein synthesis. Means the information which is coded, the information which is Coded. coded in that mRNA molecule will be translated into protein. अपन क्या बोलते हैं वो किसमें ट्रांसलेट हो जाएगी? Protein. हाँ, so the synthesis of protein, the process of synthesis of protein is called Shifa will tell now. What is the synthesis of? हाँ, again. Some translation. Translation. So Aditya, what is the process called? Translation. Why you are calling translation? Synthesis of protein. क्यों अपन उसको ये नाम रख दिए? मैम हाँ नहीं पता। कोई बता सकता है? Ma'am, because information coded in mRNA is translated to protein. Very good. Because the information is translated into protein. So process is called translation.
इज इट क्लियर? चलिए, तो अब अपन ने डिटेल में ना रेप्लिकेशन कर लिया था, और रेप्लिकेशन में हमने लास्ट क्लास में वी एंडेड अप देयर दैट द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हैज one old strand and one new strand. Okay, because two strands get separated, see this replication form. So everyone try to understand. ये double strand दिखा रहे हैं इधर पर, एक का 5 dash end रहता है, तो other one will have 3 dash end free. And when the replication has to occur or the transcription has to occur, the two strands will separate. जब दो strands separate होंगे, तो ये एक strand हो गया, ये एक strand हो गया. Okay, each strand will be called as a template. What it will be called, Aditya? टेम्पलेट. टेम्पलेट. उस टेम्पलेट के ऊपर उसके रिस्पेक्टिव नाइट्रोजन बेसेस रहेंगे. अब ये दोनों अलग कैसे हो गए, समझ गए? How the two have got separated, Yuvesh? Yes, ma'am. What? How they got separated? यहाँ पर क्या टूटेगा तो ये दो अलग हो जाएंगे? Ma'am, DNA strand. अरे स्ट्रैंड दो अलग अलग कैसे होगा? पहले तो ये दोनों बाजू बाजू थे, कैसे Yes, जुड़े ma'am. थे वो? हाउ दे वर जॉइंड? Ma'am, hydrogen bomb. हाँ, अब ये अलग कैसे हो गए? Ma'am, breakage of hydrogen bomb. हाँ, by the breaking of the hydrogen bonds, and hydrogen bond is formed between. ANT and नाइट्रोजनस GNC. बेसिस. हाँ, so अगर जनरल में बोले तो क्या बोलोगे आप? Between. Nitrogenous bases. आगे और एक वर्ड जोड़ना पड़ता है, between. Ma'am, nitrogenous bases. अरे between which Step. nitrogenous bases? हाँ, नाइट्रोजन DNA. बेसिस. आस्था क्या बोलना पड़ेगा? Between. Alima is not there today. Alima is there or not? No. Alima is not there. हाँ, चलिए बोलिए. Astha, do you know what we say? Between which? Anjali, can you tell? Ma'am, what saying? I am asking that what we say, that the hydrogen bonds is formed between. Purines and pyrimidines. लेकिन कौन से pyrimidine, कौन से purine? किसी के AT साथ. and GC. Adenine, thymine, between adenine and thymine, and guanine and cytosine. Guanine and cytosine. So what is this pairing called? Complementary pairing. Complementary pair. Thank God, मिल गया आपको word. What is that called? Complementary pairing. हाँ, तो आपको ये बोलना है, the hydrogen bond is formed between the complementary nitrogenous bases. It is formed between the Complementary nitrogenous bases. and what are complementary? You are saying again and again, ATGC. What is it? Adenine, thymine, guanine and cytosine. हाँ, ओके. अब वो आपको पता है कि एक प्यूरिन होती है, एक pyrimidine होती है, isn't it? So now what will happen? अब ये दो टेम्पलेट तो बन गए. टेम्पलेट बनने के बाद में each टेम्पलेट के ऊपर क्या होगा? नया डीएनए बनेगा. हाँ, न्यू डीएनए. ये तो अभी अपन रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो न्यू डीएनए विल बी फॉर्म. नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा. ओके, अब वो स्ट्रैंड कैसे बनेगा? बिकॉज स्ट्रैंड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और वो इससे अटैच होते जाएंगे. अब वो कौन सा फ्री न्यूक्लियोटाइड आना है? इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? What nitrogen base on the first DNA? On the मैम जो फर्स्ट रिप्लिक कर रहा है फर्स्ट डीएनए. अरे उसको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डीएनए? उसको क्या बोलते हैं अपन? मैम टेम्पलेट. See my template. You have to say template. First, second नहीं बोलना. What you'll say? टेम्पलेट ऑफ डीएनए. ठीक है, तो टेम्पलेट पे अगर A है तो फिर which one will come and bind with it? Say ना. Anyone can say. Uracil.
हाँ अरे बाबा Thymine. Thymine. हाँ मैम लेकिन mRNA बनेगा ना? पहले हमारा नहीं क्यों बनेगा, अभी तो अपन रेप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं। अच्छा अभी 20 हो रहा है। हाँ अभी तो अपन रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना, अभी तो अपना फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन तो स्टार्ट ही नहीं किया अपन ने। ठीक है, तो हाँ ए से टी हो गया बाइंड, अगर यहाँ जी है टेम्पलेट पर जी है तो सी विल कम, इफ इट इज हैविंग सी तो जी विल कम, if it is having T तो A will come and they will form a stretch of the DNA strand, and on one strand continuous synthesis is going on of the DNA, so you call that strand as leading strand, and on another template you find small segments of the DNA will be formed, and what are those segments called? Sorry, what are Okazaki Okazaki fragment. fragment. Okazaki fragments, and in which direction the replication goes on? You मैम may 5 to 3 you wish in which direction the replication process goes on? 5 dash to 3 dash. Is it clear to everyone? So एक strand what? पर 5 dash to 3 dash, ये arrow देखो, this template is having 3 dash end free, तो इधर पर जो naturally जो बनेगा वो 5 dash end से start होगा, तो it will be going upward. अब when you see this strand, it is having 5 dash end this side free, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन का रेप्लिकेशन प्रोसेस विल कंटिन्यू. ओके, द What we रेप्लिकेशन, said 5 dash to 3 dash. हाँ 5 dash to 3 dash. This is very important question for all your competitive exams. Okay, whatever I am discussing, children, each and everything they ask in the MCQ form. So remember it. Leading strand is which one? Lagging strand is which one? Okay, leading strand will be formed on the template which will have 3 dash end free, and Okazaki fragments will be formed on the DNA template which is having 5 dash end free. Is it noted by everyone? Yes or no? Ma'am, why there are fragments on other template? Yeah, say. Ma'am, why there are templates on why Ah, there are fragments on other templates? why on this template? So the continuous process is not going on, children. यहाँ पर 5 dash से 3 dash में continuous process is not going on, so you find the fragments are there. Okay, DNA polymerase is finding the interruptions, so that's why it does not go on continuously, and you find the Okazaki fragments. फिर बाद में क्या होता है? The DNA ligase will come and that will join the fragments. That will Join the fragments. हाँ, फिर अपने 2 मॉलिक्यूल बन गए. ये अभी ऊपर एक ही डीएनए था, एक डीएनए से 2 बन गए. So this is known as DNA replication. Now I want to tell you, now since you find that ये जो नया डीएनए बन गया इसमें एक तो old है and the other one is new. So the process of DNA replication is called Semi-conservative process. it is called semi-conservative process. DNA replication is semi-conservative. So whether it is semi-conservative or not, children, it was proved experimentally by Michelson and Stahl. Who proved it? Michelson and Stahl. You can note down. ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख लो that DNA replication is a semi-conservative process. It means that the new DNA formed in a new DNA formed, one strand is old and one strand is new. That is, the new DNA molecule
has one parental strand and one newly synthesized strand. So I want Ma'am, repeat. Pranjal to read now. Pranjal, are you there? Ma'am, repeat. Ma'am, repeat. The replication process is a semi-conservative process. That is, during the synthesis of the DNA, in a new DNA molecule, one strand is old. That is, it is parental strand. And one strand is newly synthesized. And one strand is newly synthesized. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now I want Shifa to read. Pranjal is there or not? Pranjal has joined the class today. Ma'am, No. बोलिए. ma'am, हाँ, what is say the role Manju. of Okazaki fragment? Ma'am, what is the Okazaki role of fragment. Okazaki fragment? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का कोई रोल नहीं, वो तो सिंथेसिस हुए हैं, छोटे छोटे पीसेस है, वो जुड़ जाएंगे तो नया डीएनए बन जाएगा. ओके. Ma'am, न्यू new डीएनए. fragments हैं. हाँ, they will join. Ma'am, they are the fragments of new DNA. हाँ, they are the small segments of the new DNA formed on the template. हाँ, on the template which is having the 5' end free. Yes, ma'am. मैम हाँ, मैम ये ओकाजाकी स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड सेम ही हुए ना? ओकाजाकी स्ट्रैंड नहीं बोलोगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं. हाँ, और लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड. Okay, this is asked for 2 marks, children. What is the difference between leading strand and lagging strand? So leading strand is that on which the continuous DNA replication takes place. Okay, and it's free end, What? 3' end, on which continuous replication process takes place. And lagging strand is that in which the replication is discontinuous. And small segments of the DNA are formed, which are called Okazaki fragments. Done? बात समझ में आ गई पूरी इतनी कि नहीं आई? यस मैम, यस मैम. हाँ, ठीक है. चलिए, तो अब कौन रीड करने वाला है? एक बार रीडिंग तो कर दीजिए 3 points. Shifa, I want now. Yes, ma'am. Ma'am, here are 3 points. Yeah. They are on the screen, you read it. You have already written, children, in your simple words. Yes, ma'am. Ma'am, in replication, 2 strands of the DNA helix separate. Each strand acts like a template for the synthesis of a new complementary strands. After completion of replication, the 2 copies so produced will have one parental and one newly synthesized strand. This type of DNA replication is known as semi-conservative replication. Is it clear to you? If it is asked in the exam, what do you mean by the semi-conservative replication? Or why the replication is called semi-conservative? So this whole thing you will have to write down. पहले थोड़ा वो इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा कि इन रेप्लिकेशन 2 strands of the DNA helix separate, पहले सेपरेट होते हैं, फिर each strand acts like a template. You have understood. For the synthesis of a new, आज जो नया बनता है उसको अपन complementary strand बोलते हैं. What is it known as, children? Complementary strand. Why you call it complementary? Because it will have the complementary basis. It will have the Complementary basis. Okay. Then after the completion of this whole replication process, you find that 2 copies will be produced.
Okay, and in both the copies, you will find one will be the parent and one will be the newly synthesized strand. Is it very clear to everyone? Yes, ma'am. Yes or no? हाँ, Yes, याद ma'am. हो गया? याद भी हो गया? Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. Okay, now try to see here the picture, the figure. This is one DNA. You find इसमें से दोनों strand अलग अलग हो गए, तो the dark one is there, one is dark, one is lighter. Could you get it here, children? This Yes, Yes, ma'am. one ma'am. is clear. हाँ, अब now अब ये भी दो अलग अलग होंगे, तो one template will be darker, one template will be lighter. उस light के ऊपर एक और नया बन गया, तो this both will be light. Here also the same thing is happening. Is it clear? So you find two are which ones? Two are which ones? Parental type. हाँ, and दो तो बिल्कुल ही नए हो गए. Is it clear? So this process we will see it quickly in the experiment. So how it was proved experimentally in the lab. So Michelson and the Stahl, these two people did the experiment in 1958. Okay, and now what was the experiment? So they took the bacteria E. coli for the experiment. So how they proceeded for the experiment? They had grown the E. coli bacteria in a medium with heavy isotope, that is the nitrogen 50. एज अ नाइट्रोजन सोर्स, मतलब उनने कल्चर मीडियम में N15 डाल दिया, उस पे ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया. ग्रो करने के बाद क्या होगा? नाइट्रोजन विल बिकम द पार्ट ऑफ द से ना क्विकली डीएनए में Ma'am, of नाइट्रोजन DNA. कहाँ? हाँ हाँ हाँ, अगेन यूवेश. Ma'am, of the DNA of E. coli. पार्ट ऑफ द डीएनए में कहाँ पहुंचेगा ये नाइट्रोजन? टेल मी Ma'am, in the which nitrogenous component? bases. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगा ई कोलाई का न्यूट्रिशन उसी कल्चर मीडियम से लिया, ये N15 डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में चला जाएगा, सो दैट डीएनए कैन बी इजीली डिटेक्टेड. Okay, so for the detection purpose they took the isotope, that is the heavy isotope N15. Now this increased the molecular weight of the DNA. Now cells from that N medium were transferred into N14 medium. पहले तो कल्चर करके N15 वाला DNA बन गया, and that was done in the E. coli. Remember, DNA we are not taking out. They never did anything like that. बस E. coli को grow किया, grow करने के बाद किसमें ग्रो किया सबसे पहले? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? पूनम. Ma'am, they grow in a medium with heavy isotope N15. Okay. हाँ. So now that got incorporated into the E. coli's DNA. Okay. Then they took this E. coli, the N15 E. coli, and they have transferred it into the N14 medium. Then since the generation time of each, आपको पता है कि उसका रिप्रोडक्शन का टाइमिंग कितना 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स बाद उन्होंने उसको देखा, तो द डीएनए सैंपल्स एट 0 मिनट्स दैट इज N15 मीडियम. 20 मिनट्स के बाद क्या देखा? तो N14 मीडियम पे देखा, फिर 40 मिनट्स बाद देखा. दे वर ऑल एनालाइज, 20 मिनट्स में एनालाइज किया. एक बार रेप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि रिप्रोडक्शन का टाइम उनका 20 मिनट्स है, तो रेप्लिकेशन हो जाएगा. तो नाउ सी 0 मिनट में देखा, all the DNA which was having, it was radioactive. After 20 minutes they found what? That somewhere 50% was दूसरा फिगर देखो. Radioactive. This figure you say, this is there in your textbook also. So everyone will be making this figure in the notebook. Okay, this is N15 DNA. Then what was done? The next they transferred it to other medium which was having N14, allowed it to reproduce.
and waited for 20 minutes. After 20 minutes, they did the centrifugation and tried to detect the isotope. So they found that hybrid DNA was produced. One strand was parental type, that is N15 it was showing, and one newly synthesized with the N14. Okay, so this is generation one. So they are showing by the color difference that this parental one is red. The new form you find had one with one with N15 and one with N14, which is marked by green color. N14 is marked by Green Green color. color. green color. Then they further allow those bacteria to continue growing in the same medium. Okay, and then they observed it after further 20 minutes, that is 40 minutes. So अब replication तो continue रहेगा. So this is generation 2 marked. Now when they observed that, so they found that the hybrids were also there, half hybrids were there, half light. So half the DNA had N15 and 14 strands, and half had N14 and 14. That is the light strand. Heavy strand we are considering which is having N15, and light strand we are considering that one which is having N14. Now try to see here this picture, the colorful which they have made. Okay, और ये सब देख कैसे रहे हैं after centrifugation. That's why they are measuring here gravitational force. तो जो लाइट होगा वो ऊपर मिलेगा, जो डार्क होगा वो नीचे मिलेगा, कुछ और करना नहीं है. इधर N15 में सारे नीचे सेटल हो रहे थे, यहाँ N14 और N15 वाले सारे ऊपर आ गए. ठीक है, अब तीसरे केस में सेंट्रीफ्यूगेशन जब करने के बाद ऑब्जर्व किया टेस्ट ट्यूब को, तो कुछ तो नीचे सेटल हो गए, कुछ पूरा ऊपर आ गए. वो मतलब पूरे ही लाइट है, वो पूरे ही लाइट है. सो दे केम ऑन द सरफेस. ओके, सो इट प्रूव्ड. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, दैट some which came on the surface they were having N14. Both the strands were N14, which is being denoted by the green color only. So both the strands are green colored. That is, they are having, यहाँ पर labeling अलग है. What you say, children? This labeling is not N15, it is N14. So this is also N14. This last one is also N14. और तो 50% N14 वाले हो गए, and 50% were hybrids. 50% were Hybrids. hybrids. What do you mean to say hybrid? Ma'am, both N14 and N15. So you have to say one strand was having N14 and one strand of the DNA was having N15. N15. तो इस experiment से Measles and Stahl they concluded that the replication process is a semi-conservative. Replication process is a Semi-conservative. So I want someone to read now. Read this slide. The points given down. So someone means Manjul now. Yes, ma'am. हाँ. E. coli was grown in a medium with heavy isotope N15 as a nitrogen source. N15 was incorporated into the E. coli DNA. This increased the molecular weight of the DNA. Cells from N15 medium were transferred into N14 medium. This Since is the second gen- step. हाँ. since the generation time of E. coli is 20 times, DNA samples at 0 time 20 is 20. minutes हाँ. 20 minutes. DNA sample at 0 minutes is 0 minutes, then which is N15 medium, and 20 minutes हाँ. in N14 medium, and 40 minutes in N14 medium were analyzed for molecular weight using density gradient centrifugation. हाँ.
Yes. यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हम वही बता रहे थे, टेस्ट ट्यूब में डाल के खूब स्पीड से रोटेट करते हैं, दैट इज अ मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन। अरे इसके लिए ना आपको हम क्या बताएं, व्हेनेवर if you have visited, I don't know, to give the blood sample, after taking the blood sample in those small test tubes sort of, they put it in one machine जो ना हिलती रहती है पूरे समय, किसी ने Yes, देखा ma'am. है ना, यस मैम। वो रोटी रहती है, बस ऐसे 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 हिलती रहती है। मैम वो आरसीबी मालूम है? अलग कर देती है और मैम सीरम अलग कर देती है। हाँ बिल्कुल सही, वो वही करती है, ब्लड सेल्स को अलग कर देती है और ब्लड प्लाज्मा अलग हो जाता है। ओके, दैट यू कॉल इट द सीरम। तो यही काम हो रहा है, तो वेट के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। ओके, जो लाइट होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो हेवी रहेगा वो नीचे चला जाता है, जो जिसका जितना वेट होगा वो उस हिसाब से नीचे, फिर वो उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसा चला जाता है। ओके, इसलिए अपन को ये पिक्चर में ऐसे दिखा रहे हैं। फॉलो। हाँ, अब नाउ नेक्स्ट रीड कंक्लूजन। मंजुल। Meselson and Stahl concluded from the above observation that during DNA replication, each strand of the DNA double helix act as a template, and a new strand is synthesized complementary to the parental strand. Yeah. The replication was proved to be semi-conservative. So if anyone wants to write down to tell me, तो हम जल्दी से 2 मिनट आपको देते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। And if you have understood and if you can write it in your simple language, तो no problem, आप स्टोरी जैसे लिख देना है। You followed the experiment or not? Nandini, Yes, ma'am. did you understand this whole experiment? Yes, ma'am. Done nicely ना, समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब क्या करना, बाकी सब लोग को आया कि नहीं आया समझ में? मैम आ गया। Yes. Yes, ma'am. Now your work will be, it's given very nicely in your textbook also. Okay, so now what you will be doing, पहले तो हम जो replication भेजेंगे वो लिखना, उसके बाद में ये सेमी कंजर्वेटिव वाला ये डायग्राम बनाना, फिर एक पेज में ये एक्सपेरिमेंट पूरा लिखना, and then start with the transcription, then your translation. Okay, we'll do it that way. ओके मैम। Yes or no? ठीक है, so it is 2:17. We will stop the class. Okay, so your work will be do the reading. Reading is very important of the textbook. And any sentence if you don't understand, so then tell me. Okay, otherwise we'll move ahead with the next what step? Transcription. ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन ना डायग्राम बनाने के बाद में हम वो जो डायग्राम आप बना लोगे तो वो हर each student will see in their notebook, and then I will explain that what each step you have drawn explains. Is it clear? यस मैम। Yes, ma'am. तो नोट्स को जो भेजेगा उनको रीडिंग करना अच्छे से, क्योंकि अब समझ तो आ गया, वो पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा कि पहले ना कॉइलिंग है, फिर वो ऐसे निकलेगा, फिर टूटेगा, ऑल दैट। ओके, सो नाउ लेट अस डू शांति पाठ चिल्ड्रन। ओम शांति शांति शांति। Sai Ram children. So you all can leave now. Only Alima has missed the class today, na? मैम नोट्स मैम शायद वो दोनों गए मैडम की भेजेंगे ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके।